Hey, little one. There you go. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज HuntergeniX। और आज का जो स्ट्रीम है वो एक कंपनी स्टोरी का है, कैंटरेला का, जो कि ये नहीं थे, बहुत सारे है। जैसे कि बहुत सारा तो नहीं है, 3 ही बाकी है। एक कैंटरेला का है और बाकी जीमा के है शायद, देखना पड़ेगा। ओके, एक था जानी का है, कैंटरेला का है और कमेलिया का है। तो ये 3 बाकी है और 3.0 आ चुका है। उसका अभी तक कुछ मैं चेक किया ही नहीं। मैं थोड़ा पर्सनल इशू के कारण मैं कुछ चेक कर ही नहीं पाया, कि गेम भी खेल नहीं पाया। तो इसलिए मैं उसको देखूँगा। पहले उसका करने से पहले मुझे 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। एक, मुझे इंटरनेट स्टेबल करना पड़ेगा, जो कि मेरा स्टेबल नहीं है। मैं थोड़ा दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो चुका हूँ और जहाँ के नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है। और सेकंड, गेम में जो बाकी है, पुराना वाला गेम है, वो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद 3.0 स्टार्ट करूँगा। तो उस कितने टाइम के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था, ये वाला प्रॉब्लम चल रहा था, नेटवर्क वाला Let स्टेबल नहीं। me तो मैं see. बोल रहा था कि मेरा जो गेम है पुराना वाला Aha! कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद नया वाला जो 3.0 स्टार्ट करूँगा। तो जो बाकी 3 है कंपनी स्टोरी, वो ख़त्म कर दूंगा। बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है, वो बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3.0 स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरा इंटरनेट का इशू ही चल रहा है, पता नहीं कि ये कब खत्म होगा। ये ठीक हो चुका है, लेकिन तब भी मेरा Hey, little one. इंटरनेट इशू आएगा ही। There you go. मेरा प्रॉब्लम में ही चल रहा है। एक बार स्टार्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम नहीं, गेम स्टार्ट होना जरूरी है। एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद चल जाएगा। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। ओके ओके, ऑडियो चेक, माइक चेक। चलो, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरा कंपनी स्टोरी करना है, तो आज कंट्रोलिंग का करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी, ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं एक बार गया था। एक मेन मिशन तो नहीं, एक साइड क्वेस्ट शायद कर रहा था। साइड क्वेस्ट या कुछ दूसरा कुछ कर रहा था, जिससे मैं ये कंप्लीट करने वाला था। जो भी कंप्लीट नहीं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि जो कि मिशन रहता है, मैप एक्सप्लोरेशन का, वो वाला मिशन कर रहा था। तो यहाँ पे आ गया था। तो ये कंट्रेलर का स्टोरी लाइन में कितना 1 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं फंस गया था, निकल ही नहीं पाया था। तो वो थोड़ा चला गया था स्टोरी के अंदर, लेकिन निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखते हैं, वो 1 या 2 मिनट तक तो स्टोरी चल ही रहा था लास्ट टाइम। अभी स्टार्टिंग से चलेगा या नहीं वो पता नहीं, अभी देखेंगे स्टार्टिंग से चल रहा है कि नहीं। ओके, तो फिर स्टोरी स्टार्ट कर लेते। वहाँ पे जो जहाँ पे स्टोरी First to the स्टार्ट होगा वहाँ treasure. पे जाते। वहाँ पे एक कैरेक्टर है, एमपीसी है, जिसको मतलब पूछना होगा, अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला कैरेक्टर है, उसको देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसको पूछना है और कुछ नहीं। ये पूछना है कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, जिसके बारे में इसको पूछना है। इसको पूछने के बाद ये जो कंट्रेला का स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कंट्रेला कंट्रेला का कंपेनियन स्टोरी। हाँ, और एक चीज़ है कि मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं है, जो कि आगे भी वैसे चलता रहेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, नेटवर्क इतना स्टेबल भी नहीं रहता है। नेटवर्क के बारे में कंप्लेंट करो तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। आपके एरिया में बहुत सारे कंज्यूमर है, क्या ही कर सकते हैं।
ठीक है। ये तो हो गया वो नेटवर्क के बारे में, क्योंकि सहना पड़ रहा है, क्या करें। चलो, और इसको पूछ लेते हैं, फेस्टिवल के वजह से ये सब मास्क लगा के बैठे हैं। ये एक ही बंदा जो कि मास्क लगा बैठा है, बाकी कोई नहीं। ये फेस्टिवल के अंदर ही है। जब फेस्टिवल के अंदर एंटर करेंगे तो ये मास्क वाला ऑप्शन आ जाएगा। मतलब मास्क मैं पहनने वाला हूँ या नहीं वो पता नहीं, लेकिन सारे जितने भी एनपीसी है वो मास्क पहनते रहेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Would you like to proceed, Honored Laureate? लॉरेट, ये क्या है? okay, Perfect. Please, follow me. एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल के अंदर जाना है, वही चीज़ है। नेटवर्क में थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही बात, अभी बोल ही रहा था, स्टार्ट हो गया नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा है पता नहीं। नेटवर्क स्टेबल नहीं है, वही चीज़ मुझे लग रहा है, फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा। जिस एरिया में रहता हूँ वो सब फ्लक्चुएट होता है। ये नेटवर्क ही। डाउन चल रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में प्रॉब्लम होगा। इतना डाउन होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत डाउन है। कुछ ज़्यादा ही डाउन है, नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है। गेम लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना खेल सकते हैं, इसलिए मैं एक्चुअली ये जो कारण चल रहा है ये गेम का, नेट स्टेबल नहीं है तो मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ। This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. वेट करके बैठना पड़ेगा, अभी नेटवर्क नहीं है टोटली।
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. बहुत खराब एक्सपीरियंस है नेटवर्क का भाई यार, दिक्कत हो रहा है ये। थोड़ा सा भी नेटवर्क आ भी नहीं रहा है, जितना मैं रिक्वायरमेंट है मेरा, जितना रिक्वायर्ड सेटिंग है उतना तो कहा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना भी नहीं आ रहा है। तो इतना डाउन नेटवर्क है, इससे तो काम ही नहीं होगा। नहीं होगा ऐसे काम। This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey.
This ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग में थोड़ा दूसरा नेटवर्क से चल रहा हूँ This is a तो testament to my connection with the world around me, and it's very Okay. much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. टेम्परेरीली नेटवर्क शिफ्ट करके चला रहा हूँ। ओके ठीक है, तो देखते हैं ये क्या था। हाँ, अभी कंट्रोल के साथ बात करना था। ओके, तो चलो बात करते हैं। नहीं, कंट्रोलर के साथ बात नहीं, हेड टू द फास्ट स्टोर और इसके स्टोर के पास जाना है। या फिर कंट्रोलर के साथ बात हो चुका है, इसलिए ये अभी दिखा नहीं रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है वैसे ही कुछ वहाँ पे आधा हुआ था। हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम हुआ था वो स्टोरी जो बोल रहे थे 2-3 मिनट Welcome. का जो गेम स्टार्ट हो गया था, Would you like to reach for the brightest उसका रिजल्ट है। star in the sky? लास्ट टाइम हो गया था Or इसलिए वो indulge दिखा in the नहीं रहा है। greatest joy कौन of सा the स्टोरी में था mortal पता नहीं अभी, world? लेकिन वहाँ पे हो गया था, स्टार्ट हो गया था, तो अभी इसके साथ ही चलना पड़ेगा। चलो। Or maybe nothing could ever satisfy your endless desire. Always so playful, Mammon. Unfortunately, my friend here isn't driven by greed. All we seek is the first riddle of the ghost girl, to set the tone for tonight. After I see. But nothing comes for free. If you want it, you'll have to trade me something entertaining. Perhaps a loaf of bread that speaks. Oil that melts into water. Or a glimpse into Thessalia's hidden past. How about a special performance from Laurent? स्पेशल परफॉर्मेंस क्या है ये? Oh, just for me? That would be an honor I'd truly relish. ओ भाई, ये इतना एक्साइटेड क्यों है भाई? परफॉर्मेंस क्या है? एक मिनट। अच्छा, ये माइंड में आ रहा है ऐसा कुछ म्यूजिक। How marvelous! I hear the sounds of birth and doom, of everlasting mountains and seas, and the fierce pulses of life. ये भी स्टेबल नहीं है क्या नेटवर्क? भाई ये एरिया क्या है यार? ज्यादा तो नहीं, एरिया कितना, मतलब कितना लोकेशंस, भाई गजब एरिया है।
This is life's symphony, each note threaded by the loom of time, more alluring than any siren's call. As promised, here is the first riddle, the siren's song. Long ago, a group of girls followed the siren's call out of town. They journeyed to the crown atop the mountain, and to the waterfall that cascaded into the depths below. Beyond this riddle, I, Mammon, have yet another gift to offer for your performance. Please take this music box. It's dusty with age, but it might just sing again with a song like you just played. That person does seem a bit extra. It's understandable. Hearing a laureate perform is an honor, a blessing for everyone in Renacita. Even this music box should be humming along in admiration. Control tap the music box, but it doesn't work. Oh, so that's why this little thing isn't behaving. Someone must have silenced it, leaving it unable to sing. Controller figure move deeply as he thinks music box, but in silent. अच्छा म्यूजिक बॉक्स ट्राई कर रहा है, म्यूजिक नहीं बज रहा है, क्या ही कर सकते हैं। शायद तुम राइट पर्सन नहीं हो म्यूजिक बजाने के लिए। Okay, until I examine it, you notice the music box has a unique shape. Okay, unique shape तो है, और ये नेटवर्क। If you look at this music box from Apple. above, doesn't it resemble a big apple? Yes. Now that you mention it, indeed it does. अरे यार मेरा नेटवर्क क्या चल रहा है यार, बहुत ही ऑफ डाउन चल रहा है, ऑफ ही डाउन ऑफ डाउन। थोड़ा कुछ सही चल जा, इतना ऑफ डाउन चल रहा है। अरे ये खेलने नहीं देगा शायद, मुझे लग रहा है ये आज तो नहीं हो भी नहीं पाएगा। चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्यों है पता नहीं, क्यों ये प्रॉब्लम दे रहा है। Perhaps Mammon has offered us a little aperitif. All right. I know where we need to go next. The second riddle is waiting for us. ओके, तो मुझे जाना कहाँ है, और ये स्टॉल के पास जाना है। एप्पल वेंडर।
I know what you came for. नो डाटा रिसीव। भाई यार क्या है चल रहा है यहाँ पे? यूट्यूब डाटा रिसीव ही नहीं कर रहा है। नेटवर्क इतना अनस्टेबल है, नेटवर्क मतलब डाटा रिसीव ही नहीं कर रहा है। कैसे भी करके ये स्टोरेज खत्म करना पड़ेगा। नेटवर्क बहुत डाउन है। अच्छा नहीं लगता है गेम बीच में नेटवर्क डाउन हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। Without exceptional insight and unparalleled courage, all you'll end up with are mere scraps. If you lack what I seek, then just swallow the scraps with the ashes. Good enough for the fishes, perhaps, but hardly something to serve at the table. This distinguished friend of mine deserves nothing less than the finest dish and the freshest apple. Well then, give it a try. May you find the freshest apple. ओ वो उसका मास्क है। मैं सोच रहा हूँ कि वो बोल क्यों नहीं रहा है। मास्क है वो उसका। Go on, Okay. make a choice. Let's see if this apple holds the prize you seek. Look for help for Cantarella. Cantarella को पूछते थे। Cantarella give you her eyes sign out like please apple and That one, please. Oh nice. मुझे चूज करने नहीं पड़ा। Cantarella है कर लेगी। So, the rumors are true. Nothing escapes your keen gaze, Cantarella the Bane. This little taste of luck is just a starter. Now, allow me to serve the main dish. Okay, कुछ बैच मिला है। Here comes the second riddle, the red apple. The girls lined up for their apples, each one in a vivid, glistening red. But why would apples appear in the deep sea? Deep sea. Whether it brings luck or misfortune, taste it and see for yourselves. People of Renacita often use coin tosses for divination. Heads up signifies good fortune, a sign of following the sacred path. Tails up, however, invites misfortune, a mark of defiance against the divinity.
The front of the coin features the doll is red, while the black show on the blue. While the black show was one in blue, the coin usual appearance with uneven. Okay. Are these dolls blessed or cursed? Perhaps the last riddle will give us a clue. Blue, inspired by the deep sea. Is she a Phasalia? Phasalia? That ancient noble family known for their power plays and poison schemes? They're pretty close to the Order. One of them was even picked as the Primus. Wait, how do you know? That thing's the ghost girl, right? Yeah, I heard it's related to something that happened in the town a few years ago. भाई ये What they mean by थोड़ा based on सा a true story? Oh, that gives me the goosebumps. 30 मीटर के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है, It's just a ट्रांसपोर्टिंग चल folktale. रहा है 30 मीटर के अंदर. ओके, तो कहाँ से जाए? यहाँ से जाए. यहाँ से पूछते हैं. Which is the most beautiful among these dolls? मोस्ट ब्यूटीफुल. अरे यार ये रीडल पे रीडल चल रहा है क्या? This one has bright eyes. That one has a nice nose. And that one there has red lips. Wait, this bhai- one's got to be a bit less pretty. Can't let it outshine me. ओके ठीक है. तो भाई यार एक मिनट. इनवीडिया भाई इसका नाम इनवीडिया है भाई. इनवीडिया नाम है इसका भाई. फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आई लिखा हुआ है. आई को हटा दे, एनवीडिया हो जाएगा भाई. क्रिएटिविटी भाई देखो, खतरनाक क्रिएटिविटी है. ओके Oh, so frustrating. They're all gorgeous, but none quite live up to my standards. Now tell me, what do you think? Which doll stands out the most? look for help from Cantarella की पूछ लेते. इसका पूरा शो कैंट्रेला क्या है, कैंट्रेला की पूछते हैं. If we obey the divine will, does that really bring us luck? Doll. As you hold the doll, its features suddenly sharper. It becomes like a delicate bow, like eye, delicate of the eye. Wonderful. As long as you follow the divinity, luck will surely be on your side. Oh, nice. Now, for dessert, I present you with fortune cookies. This is the last riddle. The round hat. Okay. A girl dons her red dancing shoes and wears a scarlet hat, ready for the final act of her performance. Oh, okay. Now, all the riddles are in your hands. Whether the answers will rise like bubbles from the witch's cauldron, well, that's up to you.
Okay, so head to the resting area. Head to the resting area. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. ओके ओके ठीक है। जाना पड़ेगा रेस्टिंग एरिया 57 मीटर। अरे अरे तुम लोग बात करो, डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। Look, it's the new laureate. ओके रेस्टिंग एरिया आ गया, यहाँ पे बैठना होगा शायद, बैठ जाते हैं। Now all the riddles are here, like fish returned to the sea. However, they are entangled in a maze of seaweed. How would you free them from the maze? Analyze the keyword. Analyze the keyword. Find the connection between these items. The siren song, the red apple, the red shoes and the round hat. Among the tales of Renacita, all these three end bitterly. Okay, Renacita. However, with the laureate's aid, we may see a different ending tonight. Since all stories are rooted in reality, perhaps we should take a closer look at the three items we've collected. Let's see. A dusty, broken music box, like Lucky Coin, and a doll in a red hat. They're all out of production now. None of the music boxes these days use this kind of cog. Looks like these little trinkets are relics from the past. And then we assemble into ballerina music box. Look at this little from the past. How about we put them together? Good catch. As a girl, I used to while away those endless, quiet hours in the castle by playing with such things. Perhaps some part of me still remembers what to do. No, I'm certain I still do. Oh, nice. वही तो मैं सोच रहा था, ये क्यों है डॉल? अच्छा, ये म्यूजिक बॉक्स है जिसमें एक डॉल डांस कर रही है, और ये कुछ शायद कुछ रिडल आगे भी है। It seems all we need is the laureate's performance to breathe life back into this old relic. The show begins. ओ भाई, कौन बोल रहा है?
होलोग्राम खत्म। कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ओनली स्क्रीन यूर सस्पिशियस इज टू घोस्ट कर मस्ट बी कनेक्टेड विद द फैसिलिया कैसल। ओके ओके, फैसिलिया कैसल जाना पड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इंटरेस्टिंग है। कैंटरेला का कैसल जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। Ugh. What was that? My head. Ugh. This pain's getting worse. I need a break somewhere. You've been under this influence far too long, especially in a place filled with spirits. I should have warned you sooner. You need a proper rest, and we're not far from Thessalio Fells. Come to my castle. I have potions there that can help ease the strain. ओह नाइस, फैसिलिया फैमिली की कैसल जाना पड़ेगा, लेकिन ये इनवाइट अपनी तरफ से कर रहा है। कर दिए तो डायरेक्ट इनवाइट हो गया। रेस्ट करना था, बातचीत नहीं करना था। प्रॉपर रेस्ट चाहिए था। ये क्या है? ये टी जैसा तो नहीं लग रहा है। Hope this can help you feel better. ओके, ये क्या है? This potion is crafted from freshly crushed barnacle leaves, mixed with the sap of violaca, sea okra, and sea apple, all fermented in a glass vial. ओके, बेसिकली ये एक होममेड मेडिसिन है। Each of these lovely plants is cultivated here, hand-picked, sorted, and blended by my own hands. वही मैं सोच रहा था, हैंडमेड। As the poisonous ingredients entwine, though I may not be able to lift the curse binding you just yet, I can certainly help tame it for now. Ah, excuse me for a moment. It's time I tend to the flowers. ओके, ओह, तो पोषण काम कर रहा है। कुछ स्पेशल पोषण है शायद, इसलिए वो मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रेला बहुत शांत रहती है पोषण पी पी के। उनका स्पेशलिटी तो यही है, पोषण बनाते हैं और प्रोवाइड करते हैं पोषण जहाँ पे जरूरत पड़े तो। ओके, तो एक स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी ये वो कौन है? Talk to the girl hiding in the flower bushes.
ओके, तो इसको पूछना पड़ेगा क्या कर रही है वहां पे। ये वाला करेक्ट लेते हैं। हाँ, ओ डर गई डर गई। एक मिनट, ये हैट के बारे में बोल रहे थे ना, रेड कलर हैट, मतलब वही वाला हैट है, ये डोल जैसे लग रहा है। And a young girl waiting behind the blind plant, staring at you with wide, timid eye. फ्लावर के पीछे छुप रही थी, अभी प्लांट के पीछे छुप रही है, जैसे इसको किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ पे छुप रही है। हाँ, राउंड योर अटेंशन। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था, राउंड हैट रेड कलर का। कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ तो है। ये रेडियल खत्म नहीं हुआ है। घोस्ट गर्ल कौन है पता चलेगा, क्या है घोस्ट गर्ल। ये कोइंसिडेंस नहीं है और बहुत ये सस्पिशियस भी है। ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हु आर यू, व्हाट आर यू हियर, आर यू ये क्या है, डायरेक्ट पूछना है। आर यू वन ऑफ द घोस्ट गर्ल्स, डू यू नो वेयर कैंटरेला इज। ये पूछ लेते हैं। ओके, गर्ल अटेम्प्ट टू स्पीक, मतलब वो बोलना चाहती है लेकिन कुछ मम्बलिंग कर रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ओके, बाकी नहीं। ओके, वहाँ पे कुछ है। कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। चेना का कुछ रीजन है क्या, देखते हैं। कैचअप टू द गर्ल। ओके, ओ यहाँ पे कुछ है, देखते हैं क्या है। ये तो फैसिल फैमिली का कैसल है ना, कैसल के अंदर ये कुछ चल रहा है, तो कैंट्रेला का कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या है। और ये जेलीफिश कैंट्रेला का स्पेशलिटी है ना, जेलीफिश कैंट्रेला का स्पेशलिटी। और ये कुछ फिश। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं सी एप्पल। बार बार नेटवर्क कट रहा है, क्यों इतना नेटवर्क खराब चल रहा है कि क्या ही बोल सकते हैं। नेटवर्क खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रीम में इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्रीम ठीक से नहीं चल रहा है, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं। अभी तो 3.0 आया है, उसके लिए ही तो अभी सब रेडी कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे बहुत मतलब खराब है। खराब मतलब बहुत ही खराब है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी चारों तरफ ही वही प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ का जहाँ पे जाओ प्रॉब्लम तो है, नेटवर्क इतना स्टेबल भी नहीं है। ओके, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ मी, आर यू ट्राइंग टू शो मी दिस प्लांट, ये पूछ लेते हैं। ये हाइड एंड सीक खेलना, ये तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तो बोलना चाहती है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पूछना जरूरी है। शो मी दिस प्लांट, ट्राई टू शो मी दिस, कुछ है। गर्ल सिर हिला रही है। ओके, क्रिम्सन प्लांट resemble an apple, yet it seems more like a peculiar plant creature. ओके, तो ये पानी का कुछ वैसे प्लांट हो सकता है, वैसे ही कुछ लग रहा है, वाटर का जैसे ही बोलते हैं लोटस, वैसे ही कुछ लग रहा है। लोटस फ्लावर जैसा तो नहीं है, लेकिन उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। Apple. Apple in the sea. Sea apple!
ओके, तो ये सी एप्पल है। सी एप्पल known as to be poisonous. This clue must be key of the solving the riddle of the red apple. Before you ask the girl anything more, she has already run to the another spot. ये लड़की क्या दिखाना क्या चाहती है? मुझे तो लग रहा है कि ये घोस्ट है जो कि फिजिकल फॉर्म में आई है और पूरा ठीक से पता भी नहीं चल रहा है कि घोस्ट है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये घोस्ट है। अभी तक तो घोस्ट के सीरीज हिसाब से चल रहा है कंट्रेला का। ओके, तो इतनी जल्दी पीछे कैसे चलेगी? Live to hunt. ओके, तो कहाँ जाना है? अच्छा, को फॉलो करना है। ओके, और ये ब्लूम जेली रोज ये ब्लूम हो चुका है। वो वाला फ्लावर का ही है शायद। जेली रोज क्या है देखते हैं। जेली रोज क्या है? ओके, तो प्लांट रिसेंबल एन एप्पल बट इट सीम मोर लाइक ए पिकुलर मेरिट। भाई बार बार क्यों बोल रहा है? Jelly rose, round hat. Could the round hat worn by the girl in the riddle actually be a poisonous jelly rose Medusa? क्या? If that's true, then the ghost girls indeed have a connection to the Physalius. I need to discuss this with Cantarella. कैंटरेला कहाँ गई? ओके, फिर से क्यों सिर हिला रही है? पता नहीं क्या चल रहा है इसके साथ। ओके, कैंटरेला डिस्कस विद व्हाट यू लर्न। ओके, गर्ल नोटेड टर्निंग अप अनदर आइडिया। कहाँ जा रही है भाई? ये सीन कट होने की मतलब सीन कट हो रहा है। मेरा नेटवर्क भी वहाँ पे कट हो रहा है। तो ठीक है, ये स्टेबल नहीं है नेटवर्क, तो इसलिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मुझे गेम बहुत लंबा खेलना पड़ेगा नेटवर्क की वजह से। तो देखते हैं कितना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओ भाई, ये रुक जा, तेरा इमोट अभी देखना नहीं मुझे। तो कहाँ से जाए अंदर? Live to hunt. अंदर जाना नहीं है, बाहर ही है। ओके, ये कौन है फिर? Ah, you've made it here. I'm glad to see you're feeling better. Now, we can finally have a proper conversation. भाई रेस्ट कहाँ करने दी वो? पोषण तो ठीक है, लेकिन हेडेक था वो गायब हो गया, लेकिन काम में था। ये हेडेक गया और एक घोस्ट गर्ल, शायद घोस्ट गर्ल है अपेयर होगी। वो घोस्ट गर्ल है या नहीं, लेकिन फैसले फिंडी के साथ कुछ रिलेटेड है। देखते। Did you come all this way for me? Or are you in search of the secrets slumbering in the deep? और you in search for secret? कंट्रेला को कुछ पता है क्या? उसका कोई सोर्स है क्या? पता चल जाता है।
I come for both. Such greed. Rest assured, I'm here to unravel the secrets with you, as I promised. Okay, जल्दी करो. What exactly are the sea apples and the jelly roses in the garden used for? हाँ, वो मुझे भी चाहिए था. तो मतलब वो भी मेरा क्वेश्चन था. दोनों पॉइजनस है, लेकिन वो गार्डन में क्या कर रही है? The crimson sea apple, also called the alluring reaper, is a dangerous plant. A single bite can lead to paralysis, suffocation, or the excruciating pain of a burnt throat and torn organs, ultimately bringing its victim an agonizing death. भाई मैं वहाँ पे जाके आया हूँ अभी. क्या बात कर रही है ये? As for the jelly roses, their blooms will transform into jelly rose medusae. These little ones can produce a neurotoxin that induces intense hallucinations, and in extreme cases, causes the body to seize and twist in a violent, uncontrollable dance of death. हेलोसिनेशन हो रहा था या सच में वो घोस्ट गर्ल आ रही थी या कुछ वो घोस्ट गर्ल ही नहीं थी, पता नहीं. The two lethal plants have been meticulously nurtured by generations of the Phasalia family, flourishing within the gardens of Portoveno Castle for centuries. Okay. So my guess was correct. The red apple in the second riddle refers to the sea apple, and the round hat in the last riddle points to the jelly rose medusa. As for the first riddle, Siren's Song, the crown atop the mountain and the waterfall that cascaded into the depths below clearly points here, a crown-like castle that sits atop a jagged cliff with a waterfall rushing down. Okay. The Siren's Song, crown atop the mountain and the waterfall was cascading to the depth below. ये तो डायरेक्टली इसको ही बोल रहा है, कैसल के बारे में ही बोल रहा है. वाटरफॉल हो रहा है. It seems the girls in the riddle were lured into the Portovino castle. तो वो गर्ल कौन है? गर्ल्स. गर्ल भी नहीं, गर्ल्स. The strange frequencies coming from the music box probably reflect the suffering of the ghost girls who were poisoned and tortured in the castle. एक मिनट, या एक कैसल में टॉर्चर हो रहे? But why? Why would the this? ये तो भाई वो अजीब क्वेश्चन है. क्वेश्चन नहीं तो कंक्लूजन है. ऐसे कुछ हो भी रहा था यहाँ पे. You'd engage in such senseless cruelty or take pleasure in others' suffering. There should be a reason behind this. Wait. There's one Phasalia tradition that might explain it. The divine trials. ओके, तो मुझे एक चीज याद आ रहा है कि कैंटरेला का जो फैमिली है वो प्योर ब्लड लाइन को ही आगे आने देते हैं, और उनका जो बोलते हैं कि जेनेरेशन टू जेनेरेशन एक पावर जो बोलते हैं कि ट्रांसफर होता है, डिवाइन पावर जो बोलते हैं उनको. तो शायद उसका कुछ रिलेट होगा यहाँ पे. It's a ritual to select a maiden of extraordinary willpower, a Phasalia who can withstand the Thenodian's whispers. I assume such extreme methods were needed for the trials. ओके, वही चीज मैं बोलने वाला था. एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर सर्च करने के लिए एक सिलेक्ट मेडन जैसे कि कोई ऐसा कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर बोलते हैं कि पर्सन है जो कि गॉड को प्रे करता है, गॉड का फेवरेट होता है, जो ऐसे ही कुछ डायरेक्ट गॉड के साथ बातचीत करना बोलते हैं मेडन. वो मतलब पर्सन होता है. तो उसका हिसाब से
ट्रोनोडियन विस्पर के तो बिल्डर द ट्रोनोडियन विस्पर तो इसके लिए कुछ ट्रायल करते हैं रिचुअल करते हैं ठीक है Well, I never imagined you'd solve the mystery so quickly. You never cease to amaze me. The truth behind the Ghost Girl riddle is none other than the grim secret of the divine trials. The blood and tears shed in these trials throughout the years have seeped into this castle and concocted what we now call the Sea of Ghosts. भाई ये जो चीज है ना रिफ्लेक्शन ये बहुत डिफिकल्ट चीज है लेकिन यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा से मतलब जो बोलते हैं ये इमेज देखना पड़े दिख रहा है अभी एनिमेशन में रिफ्लेक्शन एक चीज है जो कि करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे है कोई चीज है यहाँ पे There, दिखा रहे हैं past and future intertwine, and Phassalia's ancient secrets cling to the cracks of time like grotesque scabs. वो एक कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन और ड्रेस का डिजाइन और बाकी जैसे कि वाटर फ्लो ये भाई बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन डेवलपर बहुत अच्छे से काम किए हैं यहाँ पे With you by my side, I would relive that trauma and unfold the layers of forsaken time for a closer look. And if you find these scabs have somehow crept onto my very flesh and feel the need to cut them away, I'll place my full trust in you and leave it in your hands. ये एक टाइप का ये बोल सकते हो रिफ्लेक्शन है लेकिन ये रिफ्लेक्शन पूरा बोल नहीं सकते ये दूसरा इवेंट है जो यहाँ पे किया गया है एनिमेट किया गया है यहाँ पे सेम चीज़ को जैसे रिफ्लेक्ट जैसे दिखाए हैं शायद वैसे मुझे लगता है और रिफ्लेक्शन दिया गया है एक इफेक्ट वो बोल सकते हैं अच्छा है लेकिन गेम में रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो अच्छा मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ रियल ही लग रहा है जैसे बोल ही सकते हैं हाँ भाई यार Why do you trust me so much? Can you trust you? Yes. ये तो क्वेश्चन मुझे पूछना ही था Absolutely. Remember my promise. Whether it's elixir or poison, I'm ready to explore it with you. Sure. I, Cantarella Phasalia, value every promise I made to you, and vow to see them through. Now, the answers we seek lie in the depths of fierce undercurrents. Will you join me and dive into the deep sea? Sure. I got it swimming. Of course, I have seen it all. Yes, you must be those coast. Yes, I have to remove the influence of me. Answer we seek the deep. Will you join me and dive into the deep sea? Yes, I have to remove the influence of me. Yes, you must be free those co-host. पर नहीं ये तीनों मुझे नहीं लग रहा है ये कर लेते हैं आई एम गुड एट स्विमिंग स्टोरी आगे जाना है तो स्टोरी को आगे लेना है तो स्टोरी के साथ ही जाना होगा तो चलो चलते Once we enter the sea, I'll be right by your side, tightly. No poisonous creature shall harm you. तो अच्छा For you are the one I've chosen. I need
some time to get ready. यहाँ पे कुछ टाइम नहीं चाहिए, चलो रेडी हो गए. Excellent. Together we dive into the Sea of Ghosts. Is this still Portofino Castle? Something feels off. ये क्या है? कैसल? कैसल के अंदर है ये क्या? Yes and no. The past has spilled into the present here. The overflowing frequencies have enveloped the entire castle, forming this sonoro, the Sea of Ghosts. The voices of the ghosts rise faintly from the depths, like the soft pop of a bursting bubble. Listen closely to these whispers of the past. Piece together these fragile clues, and the answers will emerge on their own. Okay, तो गेम में एक एक रिडल जो है, एक एक क्लू है जो है, जितने स्टोरी अनफोर होगा, रिडल जो मतलब गेम का जो रिडल है पूरा क्लियर होते जाएगा. रिडल तो नहीं है, वो जो बोलते हैं कि इंसिडेंट जो भी जो घोस्ट है, इंसिडेंट बोल रहे जो घोस्ट है वो फ्री हो जाएंगे. यहाँ पे ट्रैप्ड होके रहेंगे या कुछ, वो कोई देखना पड़ेगा. बेसिकली गेम खेलो, क्लू अपने आप ही खुलते जाएगा. But do take caution. One wrong step in these murky depths, and we may be drawn into an endless abyss. ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन भी क्रिटिकल हो सकता है. ठीक है. With a bit of light, though, we can hold back the darkness. ओके, तो यहाँ पे टेक द लैम्प. यू Though the black of the sea is overwhelming, I've managed to preserve the last ray of light. You see, light is something that darkness can never fully devour. अच्छा. As long as it flickers, it can guide us out. I, Cantarella Thessalia, hereby grant you unrestricted passage through Portofino Castle. Let us explore and weave through the past and future together. एक मिनट, पीछे बुक सेल डांस कर रहे हैं भाई. यार क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे है यूज लैम्प इनटू यू बाय कंट्रेला certain near travel between different dimensions. अच्छा, तो giving birth to a sonoro sphere where past to future intervene. ओके, तो यहाँ पे है the in the sea of ghosts remain jellyfish floating the circular area. Use lamp within those zone travel different dimensions. तो जहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में फिश ट्रैवल घूम रहे होंगे, वहाँ पे जाके ये लैम्प यूज करना होगा और कुछ नहीं. तो ठीक है, लैम्प है सेट करना है. ओके, ठीक है. ओह भाई यार. We are now in a fragment of the past. You've done well. The past that emerges from the Sea of Ghosts is not entirely real. It only reveals what it chooses to show, which means we must uncover the hidden truth ourselves. एक मिनट,
ये Spirits past bound in है. the cracks of time. Wander no more. Please set them free with the light. They've been trapped there for far too long. Call from the abyss. Hey? Surge of deep tides. Nice. Immunity of all form of attack. अच्छा तो switch their respective dimension, clear their shadow and make them. ये तो ठीक है. तो enemy dimension the shadow, grant the immunity. ये तो ये immunity है इनके पास. That tickles. Sink into the endless deep. ओके तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो नया सिस्टम आया है ऑफ ट्यून मिस ट्यून जो भी है ऑप्शन दिया गया है अभी 3.0 में. ऑफ ट्यून जो एनिमी को फाइट करने के टाइम मिलता है ट्यून करने के लिए, वो यहाँ पे भी दे रहा है. पुराना जो गेम का जो सिस्टम है वहाँ पे भी ये अप टू डेट है और यहाँ पे भी वो ऑप्शन दे रहा है ऑफ ट्यून के लिए. भाई ये वो चीज़ बहुत अलग हो जा रहा है यहाँ पे. ओल्ड स्टोरी में वो चीज़ अपडेट नहीं होता है कब कुछ गेम में, लेकिन यहाँ पे पुराना वाला स्टोरी में भी ये अपडेटेड है. नाइस. A potion that can grant any wish. Sounds familiar. The girls must have been lured here by such impossible promises. Cantarella, since you were part of the trials yourself, why not just tell me the secret? There. We're surrounded by twisted frequencies. It seems they're guiding us towards the truth of the divine trials. And that truth holds the key to solving the ghost girl mystery. कि बेसिकली ये कर सकती, मतलब कहना चाहती है कि ये वो सीक्रेट बोल ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास ऐसा एक चीज़ है जो कि बाकी इसका जितने भी मेंबर है तो हायर अथॉरिटी है उनके पास हो सकता है कि ये क्या मतलब कहना चाहती है या क्या कर रही है उनको पता चल जा रहा है. ऐसे ही कुछ है शायद, मुझे लग रहा है. इसके मतलब हो सकता है कि इसलिए वो बोल रही है कि वी आर सराउंडेड बाय ट्विस्टेड फ्रीक्वेंसीज. वैसे ही कुछ है. मुझे लग रहा है कि ये पूरा सीक्रेट जो है वो बोल नहीं सकती लेकिन दिखा सकती है. जो इसको मतलब बोल सकते हैं कि ट्रस्ट कर रही है, करते हैं, इनको वो दिखा सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकती. वैसे ही कुछ है. तो ये घोस्ट स्टोरी के इंसिडेंट में शायद रोवर को ये बोल रही है कि ये सब है. देखते हैं आगे क्या क्या रिवील हो रहा है, देखना पड़ेगा. During the trials, the ever-present abyss silently watched over us. I can feel the that same ominous gaze. वही चीज़ बोला हो कि इसके मतलब बोल सकते हैं कि हायर अथॉरिटी जो है वो हो सकता है कि इनको हर टाइम मतलब सर्विलेंस पे रखते होंगे या वैसे ही कुछ है. इसके लिए ये पूरा जो ट्रूथ है बोल नहीं पा रही. देखते हैं क्या है, आगे जाके देखना पड़ेगा. If I were to reveal everything about the past all at once, this Sonoro could grow unstable, or even collapse, drowning us in its wake. ओके तो ये बहुत डेंजर है.
To keep us safe, we must tread carefully and avoid taking reckless actions. अच्छा, तो ये बोल सकते हैं कि ये कुकिंग बम है। कुछ भी रिवील कर दे तो इसके ऊपर ही इफेक्ट आ जाएगी, और नहीं तो इसके आसपास जो फैमिली है उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए केयरफुल है। So let's listen carefully to what the sea is trying to tell us. ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर। ओके, यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फाइंड, ये क्या है? सी एप्पल। ट्रेलर टुमारो और ओके, हनी। The trials are tomorrow, and so nervous, but you're tiny bit excited too. This is really scary. Some of them run around all high and mighty, while others are just constantly have something or bad thing. They must be really cool at handling poison, right? Just the thought of this thing made me uneasy. I about the string physical, which means that the poison can be medicine food. He said that she said with just the right amount, it must not anyone but actually save them. Perhaps when I pass the trial, I could pick up some the secret of the poison and get it out there and begin to make it. Okay, that's Jojo. Thinking about the map, little easy. Jojo said, "Poison tomorrow." Naturally, we do not have specialist plot, and they know a lot more about poison than we do. Chloe. We don't have specialist plot. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे गर्ल है जो कि उनको यहाँ पे ट्रायल के लिए ले के आए हैं। पॉइजन के बारे में इनको ट्रेनिंग दिए होंगे शायद, वैसे ही कुछ। और इनको पता है ये फेशियल फैमिली के नहीं है, और इनके एंड दे नो वी डोंट हैव फेशियल अप्रोच एंड दे नो ए लॉट मोर अबाउट पॉइजन देन वी डू। ये तो ये फेशियल फैमिली के नहीं है, लेकिन वो लोग मतलब खुद के बारे में बोल रही है कि हम इसलिए फैमिली के नहीं है, लेकिन उनको पॉइजन के बारे में हमसे ज़्यादा पता है, ऐसे ही कुछ है। The divine trials stand as a hallowed tradition of the Phasalia family, a ritual that demands every family member to offer their daughters to face the ordeal. ओके, तो यहाँ पे tradition of the Phasalia family, a ritual in every family member offer their Phasalia family का Phasalia family की क्या ट्रेडिशन है? A ritual to demand every family member offer their daughter to face the ordeal. Yet tales of these perils have driven some to seek out young girls resembling their own and use them as substitutes. These girls' parents are often offered a generous sum of money or sweet promises as compensation. ओके, बेसिकली जितने भी लड़के आते हैं यहाँ पे ट्रायल के लिए, वो तो ट्रायल लेते हैं, उसके अलावा उनके पेरेंट्स को कुछ कॉम्पनसेशन और कुछ मनी मिल जाता है।
कंपनसेशन नहीं तो कुछ मनी मिलता है। Behind this intricate web stands the late head of Thessalia. To him, the Thessalia daughters who had been replaced were nothing more than useless stones. The substitutes, however, he considered rough gems that could be polished into dazzling jewels through suffering. For him, regardless of blood, the maiden must be a Thessalia. To this end, no sacrifice was too great. Okay. 34 मीटर के पास जाना है। ओके, यहाँ पे जा भी नहीं सकते, फाइट करना ही होगा। ओके, तो इसके साथ फाइट कर लेते हैं। हो गया सत्यानाश। ओए 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 ओए, ओके, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये कुछ बुक है। बुक उठाओ। This book looks familiar. ओके, Just put it back on the right shelf, like how you did before. कहाँ जाना है? नीचे। अच्छा, जाएंगे कैसे? ये तो भाई कांच का बना है। Why not savor this? ओके, तो यहाँ पे जाने से तो जा ही नहीं सकते। ऊपर जाए कैसे Why बे? not savor this? ओके, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अभी जा सकते हैं शायद। ये क्या है? Why not savor this? ये फुटप्रिंट आ रहा है। There are many footprints of the very size in the hall. All seems belong to men, but only one is clear enough. Cantarella's footprints are among them. Oh, Cantarella इनके साथ ही। फुटप्रिंट इंस्पेक्ट हो गया। बुक सेल एंड Why करना है not तो savor this? वहाँ पे ही जाना होगा मुझे। ओके, तो ये एक दूसरा ये पेपर स्लिप है। अच्छा, तो स्टूडेंट 4 different version. The first one gave me pounding headache. Second one made me headache cramp. स्टीम ऑफ हो रहा है बार बार। स्टीम ड्रॉप भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। ओके, अभी स्टेबल हो गया।
Okay, I'm pretty dizzy. Okay, answering, but that answering this girl gave me some medicine. After eating it, I feel a little better, just enough to read back to you. Okay, facility girl मतलब ये Cantarella. You might wonder why I brought in something from my facility, but don't worry. I have been keeping an eye on her. She is different from the other. They don't seem like a farmer. She always be herself, mumbling and cleaning her. What she said last time wasn't lie. She did not hurt me. Maybe not for facilitate her bed. I'm thinking about asking for her help. You know so much about medicine and seems she is not getting with the rest. Maybe she is teach me how to mix the right person to help Jojo. I know it's risky, but if there is even a small chance, I have to try. Okay, the last one thing, security is tighter now, so be very careful. Okay, if you hear the quick noise, that is be me. That will be me, Chloe. मतलब ये जो पेपर लिख रही है वो क्लोई है। एनी जो है मुझे लग रहा है जो कैल बाहर था, जो लड़की बाहर थी, वो एनी होगी। To avoid the watchful eyes, the girls formed secret pacts in whispers. Hum a special tune. Use the right color. Knock on the door 3 times every 2 seconds. In the cold, unfathomable sea, they clung to each other, seeking warmth and comfort. The little fish huddled close, unaware of who might vanish or what tomorrow would bring. ओके, यहाँ से रिटर्न जा नहीं सकते, फिर से ये रिटर्न जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, यहाँ से आगे। Savor this. ओ भाई यार, उधर हर वक्त आ जा रहे हैं। अंदर जाए कैसे? ये ट्राई करते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ मिल जाए। ओके, अभी जा सकते हैं। डिलीवर द बुक। ओके, तो यहाँ पे They say most questions can be answered in books, but can they really? यहाँ पे फुटप्रिंट है। ओके, तो ये फ्यूचर है पास्ट, मतलब प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एनी है शायद, वही है। एनी का नाम काट दिया गया है, पता नहीं क्यों। बस यहाँ पर एक्सट्रीमली पोटेंट इज मेलिंग इनफ eating possible faith like my throat being squeezed. I could barely get a word out. When I finally come to, I tasted something metallic in my mouth. एक मिनट। Impossible to breathe. Like my throat was being squeezed. Throat was being squeezed. ये कुछ फेमिलियर लग रहा है। जो लड़की थी गार्डन के पास, उसका मतलब वो कुछ वर्ड बोल भी नहीं सकती थी, वैसे ही कुछ हुआ था। मतलब मुझे लग रहा है कि वो जो सी एप्पल है वो शायद कुछ टेस्ट कर ली होगी, इसके लिए उसका वर्ड क्योंकि उसे निकल नहीं रहा था। शायद मुझे लग रहा है कि उसका थ्रोट हो सकता है कि बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है, स्विच हो गया है,
जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, मुझे लग रहा है वैसे कुछ है। तो वो शायद एनी हो सकते हैं जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। आई barely to get word out, barely get a word out मतलब वो बोल भी नहीं सकती उसने, वो मतलब कुछ barely मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड बोल सकती थी, तो वैसे कुछ। When I finally come to, I tasted something metallic in my mouth. I don't have strength for one, let alone being one back. All I could do was to helplessly come afar there and read like apple or maybe tomato. Back in Elga town, we had fields full of tomatoes. Is it because I'm not too familiar? I'm not a true familiar that I can't work any special ability or immunity to poison. No, I can't give up. It must be because I'm not trying hard enough. Annie isn't special either, but he made it through. Eh? Annie wasn't special either, but he made it through. Even though we all never hear her voice again, the poison destroyed her vocal cord. The poison destroyed her vocal cord, and she will never speak again. जो नेटवर्क है वो पूरा डाउन हो जा रहा है जितने जब इसका एक होता है कि एक डाउनलोड स्पीड होता है, एक अपलोड स्पीड होता है। डाउनलोड स्पीड तो इस मतलब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अपलोड स्पीड प्रॉब्लम होता है जब स्ट्रीमिंग होता है, स्ट्रीम करते हैं। अपलोड स्पीड ही डाउन हो जा रहा है पूरा, जैसे बोलते हैं 0.1 तक गिर जा रहा है, तो मेरा अपलोड वहाँ पे रुक जा रहा है, तो इसके लिए ही मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। अपलोड स्पीड वेरी करता है बहुत। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। तो एनी जो है, जो उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है वोकल कोड के वजह से ही हो सकता है। वो बाहर जो लड़की है वो उसका नाम एनी है। The Phasalia family is built on poison, and from a young age, every Phasalia child is introduced to it. इसलिए फेसिलिया फैमिली के जितने भी मेंबर है वो पॉइजन में इफेक्ट नहीं होते उनको अफेक्ट नहीं होते। इसलिए ये जितने भी फेसिलिया फैमिली का जो ट्रेडिशनल ट्रायल है वो कर पा रहे हैं, बाकी जो आउटसाइड फेसिलिया फैमिली के है वो ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जो मेडन के लिए जो ट्रायल होता है उसके लिए वो compete नहीं कर पाते। Years of exposure gradually build up our resistance. At first we suffered, but over time, few poisons could harm us. ओके, तो ऐसा नहीं कि पूरा पॉइजनस पॉइजन इफेक्ट नहीं करता, कुछ पॉइजन है जो कि इफेक्ट करता है फेसिलिया फैमिली को। We are no longer merely the bearers of poison. We become the poison itself. ओके, वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि फेसिलिया फैमिली में ट्रायल होता है जो कि सिर्फ फेसिलिया फैमिली का नहीं है, बाकी बाहर का भी ट्रायल लेते हैं। Why not savor this? मैंड्रोगोरा फेसिलिया, हेमिनोन फेसिलिया, कंट्रेला फेसिलिया, एनी फेसिलिया। The above candidate have passed the trial of the poison. Please take a moment to rest, prepare for the second trial. यहाँ पे कोई का नाम नहीं है,
एनी फेसिलिया जिसका थ्रोट वोकल पोर्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। कैंट्रेला जो अभी भी है यहाँ पे। फेसिलिया फैमिली मतलब ये नहीं कि फेसिलिया आउटसाइड फेसिलिया है, मतलब ये है कि यहाँ पे आउटसाइड फेसिलिटी मतलब नहीं, ये नहीं कि फेसिलिया ही नहीं हो, वो नहीं। यहाँ पे फेसिलिया के बहुत सारे फैमिली होते हैं, वैसे फेसिलिया का नाम से बहुत सारे फैमिली होते हैं। ये मेन फैमिली या वैसे कुछ है, साइड फैमिली मेन फैमिली वैसे कुछ रहता है। तो जितने भी फेसिलिया है वो कम्पीट करते हैं, और जो मेन फैमिली का है वो ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं जो साइड फैमिली के हिसाब से, मतलब हिसाब से नहीं, साइड फैमिली से ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं मेन फैमिली, उनके पास ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि मेन फैमिली के पास ज़्यादा रिसोर्सेस है साइड फैमिली के अलावा। तो हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी फेसिलिया फैमिली है, जितने भी फेसिलिया फैमिली का कैंडिडेट है, डॉटर है, वो यहाँ पे कम्पीट करते हैं मेडन की कोई चीज़ है। आउटसाइड फेसिलिटी नहीं है, मतलब जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि आउटसाइड फेसिलिया फैमिली से जो है वैसे नहीं है, आउटसाइड फेसिलिया फैमिली से नहीं, फेसिलिया फैमिली का है लेकिन मेन ब्रांच हो सकता है या दूसरा कुछ ब्रांच हो सकता है, जैसे कुछ मेन ब्रांच हो सकता है, नहीं तो साइड ब्रांच हो सकता है। बहुत सारा साइड ब्रांच होते हैं ना, इसलिए मेन ब्रांच तो एक रहता है, मेन फैमिली रहता है, और साइड फैमिली भी बहुत रहता है। वैसे इसलिए फैमिली का भी है, कुछ मेन फैमिली है, साइड फैमिली वैसे कुछ है। कैंट्रेला शायद मेन फैमिली से ही बिलोंग करती है शायद। Stillness, darkness, silent, cold, and you will lost in darkness pass, and you will be face the ever greater darkness, for the merciless poison that we know. रो रहा है या क्या कर रहा है? Sweet dreams, girls. May you rest in peace. एक मिनट Engulfed by sea's venom. The nerve. That tickles. Cold. Okay, answer remain the so much yet from the people past in the familiar door rise. अच्छा ये इसका ये है क्या, जेलीफिश टाइप का है ये? ओह नाइस। यहाँ पे कुछ नहीं है, डोर के पास जाना पड़ेगा अभी। ओके Maybe try knocking 3 times, as the girls once did. Knock, knock, knock. भाई कंट्रेला डरा रही है। Interact with the door.
Knock the door 3 times. Smash the door. Close the cell credit at the door. भाई क्या बोल रहा है? Smash the door. नहीं. नॉक नॉक तो कर सकते हैं, स्माश द डोर करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं. नॉक नॉक तो जरूरी है, अभी तो उसका क्लू तो मिला था, लेकिन स्माश कर सकते हैं, ट्राई करते हैं. ओके, योर फेस पास थ्रू द डोर. Is that you are not there, like strike water, no matter how hard you try, the force is swallowed by the endless sea. Okay, कर नहीं सकते. ओके ठीक है. और इंट्रैक्ट नीचे वाला सेल क्रेडिट प्रोसेस सेल क्रेडिट ऑटो डोर कर सकते हैं क्या? नाइस टाइप बट दिस नॉट क्विजिंग वेल. अच्छा, Necessary requests make ways to the sea ghost. The beast seem to be have no interest in providing you now and return your cell crate. Okay, nice. तो ये कर नहीं सकते, तो नॉक 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 3 बार करना पड़ेगा मुझे. ओके. Strange sensation deep into your hand. As you know, you immediately sense the shift in the surrounding frequency. Behind the door, you get the faint scent, sea water, shockwaves, jellyfish tentacle crossing around this area. Okay, ठीक है. It seems safe here. We can catch our breath amid the surging undercurrents. Okay, तो ये resting place है क्या? Even in the depths of the sea, there would be a place for resting, like the eye of a storm. Perhaps we should take a moment to explore this room. It seems like an ideal setting to gather our thoughts, or simply rest. रेस्ट करना है अभी. ठीक है. Observe the jelly roach medusa. Use sensor to search for hidden secret. Talk to Cantarella. Talk to Cantarella ऑप्शनल है, बाकी सब करना है. पहले ऑप्शनल कर लेते. नहीं, ऑप्शनल होने से पहले ये स्टार्ट हो गया. हाय नेटवर्क आ गया. बीच में नेटवर्क जा रहा है. Cantarella. What exactly happened? These girls. नहीं, Chloe को देखते. Chloe कौन है? Little Chloe. I hope she's found peace somewhere where no pain can reach her anymore. Okay, तो Chloe अभी नहीं है. Cantarella, Chloe भी नहीं है. तो एक मिनट, जो बुक में बोल रहा था, वो बुक नहीं है. ये बुक नहीं है. ये कुछ तो है जो कि डांस कर रहे हैं. बुक सेल्फ नहीं था, मुझे लग रहा था बुक सेल्फ है. यहाँ पे कुछ है जो कि मुझे ढूंढना है. लीव द रूम, यूज सेंसर. लीव रूम क्यों करना है? सेंसर मुझे यूज करना था ना. सेंसर यूज करते हैं. ओह, एक चीज वहाँ पे है, एक चीज यहाँ पे है. और क्या है? इंस्पेक्ट. नाइट प्रिंसेस, sorceress princess, commoner princess, noble princess and angel princess assemble before the castle. noble princess तो मुझे लग रहा है कि है
कैंटरेला। नाइट प्रिंसेस कौन है? सोर्सरर प्रिंसेस कौन है? कॉमनर प्रिंसेस मुझे लग रहा है कि एनी नहीं तो क्लोई हो सकती है, कोई एक क्लोई हो सकती है जो कि कॉमनर है, शायद मुझे लग रहा है कि कॉमनर है। और एंजल प्रिंसेस वो कौन है? नाइट प्रिंसेस नोबल एंड माउंट तो गर्लैंड तो द कैसल प्रिंसेस don't prison is special wait okay now princess well okay the king princess वो everything can smell on a day okay ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया क्या है? नाइट प्रिंसेस नवल माउंट लोकेटर लेटर तो कैसल पे ओके ठीक है। The pencil gathered castle in the main hall. Queen Constance find the golden apple in the apple tree forest. Apple tree forest. The castle so apple red and round. Fuel and making a tom, knocking the head and rising from apple fell into the earth. Cold most of the red, most of the cold. The shade will be cold. Apple heat will leave the forest with it. The queen sit with her meal in the face, waiting for the food to take its place. Juicy bite goes down beyond on her head, flying down. When everyone will be surprised, surely find their own gold apple, gold apple. Okay, that makes their dream come true. Gold one. Okay, तो यहाँ पे Young कुछ girls dreams are always brimming with dreams. Though their bodies are caged, their hearts take flight, winging freely through realms of imagination. They recorded these ideas on paper, each word melting into a sweet candy to soothe their sorrows. I still remember there was a bookshelf that kept many such pure, sweet fantasies. ओके तो बुक सेल्फ जाना पड़ेगा, बुक सेल्फ में कुछ है। ओके सिल्वर ओके आफ्टर थ्रोन क्राउन्स ऑफ माइन facility better live. Oh, I don't know what anything. I only hear out of the obligation the family. But this hour I can't let this dull place and get some place here. Or at that time, this time of year. The flowers in the mountain in would be blooming quite nicely. Maybe I can find a new variety suitable for medicine. Okay. Because I feel scared, but I would not want to continue. Yeah, that means you can back out. Come on, prince. To cure Jojo. Honor princess. To cure Jojo. ये डियर एनी के बारे में था। एनी को लेटर भेजी थी क्लोई, कॉमनर प्रिंसेस। हाँ वो कॉमनर प्रिंसेस है। तो योर जोजो आई वोंट बैक आउट, आई विल गेट द योर ओर एलिक्सर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। एंजल प्रिंसेस एवरीवन विशेस शैल कम ट्रू। कॉमनर प्रिंसेस जो है क्लोई हो सकती है। मुझे लग रहा है कि योर जोजो मतलब मेंशन है, तो एनी को क्यों, एनी को लेटर क्यों भेज रही थी वो मुझे समझ नहीं आया। एनी उनके साथ एनी था, कोई भी उसी उनके साथ ही थी, तो ये लेटर एनी को क्यों दे रही थी पता नहीं। कोई कहाँ थी, एनी कहाँ थी पता नहीं। एनी ट्रायल पास कर चुकी है, कोई ट्रायल दे रहा था, वैसे कुछ है मुझे। या फिर एनी और क्लोई एक साथ ट्रायल दे रहे थे, शायद कुछ ऐसा ही है।
ठीक है, अभी आगे जाते हैं। अभी सेंसर कुछ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। Live to hunt. अभी बाहर जाना पड़ेगा। Before opening the door, have you ever imagined a scene where seawater rushes out, flooding everything before you? But for now, I don't think that will happen. We haven't quite reached the deep waters yet. Should we go now and see what the jellyfish are trying to say? ओके, तो Lovely. नेक्स्ट ब्लॉक। Don't forget to knock 3 times. अच्छा, तो ये रूल है क्या? वो वाला ऑप्शन देते तो अच्छा होता है। ब्लू में 3 टाइम Darkness नॉक breeds करने the का ऑप्शन जो unknown, होता तो and the ठीक अच्छा unknown होता। gives birth to fear. In a place like this, the only anchor you can rely on is the faint light by your side. Trust its guidance. It will clear a path through the shadows and quell your fears. ओके, आगे। But can the glimmers from these delicate drifters truly light up the entire sea? ये लाइब्रेरी सेकंड ट्रायल बस। अच्छा, फर्स्ट ट्रायल खत्म हो गया था। सेकंड ट्रायल अभी अच्छा हाँ, 3 या 4 जन सिलेक्ट हुए थे सेकंड ट्रायल के लिए। तो बैटल मेडन। क्लेम मेडन, बैटल मेडन, मोस्ट demonstrate statement की save using excessive emotion ability for making of the detail required capture monster venomous jellyfish। अच्छा, jellyfish कैच करना होगा from the sea, return its location upon your return। okay, you will team up with another candidate and exchange your catch. The candidate with a more potent jellyfish shall be declared the winner. In the event that you encounter accident along the way, the other pair candidate will be declared the winner by default। अच्छा, तो गेम आराम से खेलना है। कोई भी कुछ एक इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और जो अनदर प्लेयर है वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उनको विनर बाय डिफॉल्ट। ओके, तुम गेम से अपने आप ही बाहर हो जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तो जो दूसरे कैंडिडेट हो वो विनर हो जाते हैं। यूज योर एबिलिटी और endure the depth of the sea until the end. First year yourself and remember that the battle of Maiden is worthy of your pursuit. Team assignment कौन कौन है? मैंड्रागोरा, मैंड्रागोरा पेसिलिया, एपेनॉन पेसिलिया, कैंटेरेला पेसिलिया, एनीज पेसिलिया, एनीज पेसिलिया। और नीचे कौन है? कोई नहीं है। 1 2 3 4 ही तो है, तो कोई यहाँ पे नहीं है।
ओके, तो ये रूम में रोवर और कैंटेरेला है, और ये जो हार्क इज लिंगर ऑन यू डार्क एंड एंडलेस लाइक ए बॉटमलेस एबिस। ओके, तो ठीक है, क्या कर रहे हैं देखना It पड़ेगा। seems like fate insists we move as one, side by side. अच्छा, खेलना पड़ेगा क्या मैं इसके? In the realm of poison, none can rival the Jelly Rose Medusa. Ah, a scent I know well. There's a Jelly Rose Medusa lying in wait just a little deeper. लिटिल डीपर, ये तो ये ऊपर में तो नहीं है शायद, लेकिन देखना पड़ेगा। They tend to be wary when alone, their nerves quick to tingle at the slightest move. But worry not, I know what to do. ओके, तो फाइंड जेली रोज मेडूसा। जेली रोज मेडूसा, अच्छा नीचे है क्या? कूद जाओ। ओ, यहाँ पे जेली रोज मेडूसा, ये क्या हो गया? The jellyfish lived on the other side of the room. Its movement slow and on her. The bookshelf cover lended courage. Ah, I know this bookshelf well. Today it seems ambitious, hungry enough to devour 2 books at once. One titled Past, the other Present. तो क्या करना पड़ेगा? क्या पीछे जाना पड़ेगा क्या? Are we prisoners to the insatiable appetite for knowledge, or to the ever-expanding void? Yet I trust your eyes. They'll see through the tricks hidden. That tickles. Surge of deep tides. That tickles. Quite the standard, I see. Quite the standard, I see. मैं यहाँ पे था, वो बंद हो गया, वो यहाँ जाना पड़ेगा। Why not say that then? इसका फाइट मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मैं अपने नहीं किया हूँ। इसके लिए मुझे ये चाहिए, उसका टीममेट चाहिए। मेरे पास इसका टीममेट नहीं है, लेने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता है कि वो अभी इसका पूरा टीममेट चाहिए होगा, तो मुझे बाकी सबको पुल भी करना होगा। ओके, तो ये क्या है? अच्छा, प्रीमियम चेस्ट। मुझे लग ही रहा था, ऐसे ही कुछ होने वाला है। Sink into the endless deep. Surge of deep tides. That tickles. Oh, this will be fun. Try not to blink. Surge of deep tides.
ओके, तो यहाँ पे पास्ट मतलब पास्ट जाना होगा। What we want has a ओके, way ये of बॉक्स appearing when जितने भी है least वो expected. मैं अक्वायर किए नहीं था, करना चाहिए था लेकिन किए नहीं थे। ठीक है, पिक An empty shell. The remnants that past has left behind. Just one more to go. The shadow cast by present. ओह नाइस। We desire, and so we मुझे find. पता नहीं था लेकिन मिल गया कुछ। बाकी सबको भी देखना था चाहिए था लेकिन मैं देखा नहीं था कुछ वैसे कुछ मिलना था। ये सब है यहाँ पे। Luck does seem to favor you. बाकी सब भी मुझे देखना चाहिए था, मैं देखा नहीं था। यहाँ पे कुछ मिल ही जा रहा है क्योंकि कुछ तो है, कुछ रिवार्ड तो मिल जा रहा है, छोटा मोटा हो लेकिन मिल तो जा रहा है। लास्ट टाइम देखा नहीं था, देखना जरूरी था लेकिन ये थोड़ा दूसरे साइड मतलब गेम में थोड़ा इन्वॉल्व हो गया ज़्यादा ही स्टोरी के अंदर। ओके, This तो one आगे isn't picky. It's a mere accident born. बुक डिलीवर करना है। ओके ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं इसका बुक इंस्पेक्ट करते हैं। ये क्या है? मेनी बुक्स हैव बीन to their page. It says style please here press ink go। ओके, तो ये collect book present इसको present। Now both past and present are ours. Go ahead. Knock up. इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते इसको ना, ठीक है। Why not savor this? डिलीवर। अच्छा, ओ ये वाला सीन था ना। अच्छा यार, पिक्चर में नहीं आ रहा है, ये वाला सीन था। ये तो सामने वाला बंद हो चुका है ना। चलो, यहाँ पे वैसे कुछ है जो कि चेक करना होगा, इसे हिडन कुछ नहीं है। Why not savor this? यहाँ पे भी कुछ हिडन नहीं है। ओके, जेलीफिश। Frightened away. Our lethal yet delicate little friend. भाग रहा है। Looks like we need to handle these two first. अरे यार, अभी तो मुश्किल हो जाएगा ये। That tickles. Quite the standard, I see. Engulfed by sea's venom. Surge of deep tides. ओह नाइस। ओके, तो जेटल तो जल्दी ट्राई टू टेलिंग मी समथिंग। ओके ठीक है। डियर Mandakora, my dearest sister, I can with heart burning business is to all the year we have been growing up together.
As Priscilla elder daughter, as the Priscilla elder daughter, you have always served. We do love to beat on. As a welcome me into this world. So still because the way your soul, you have clothes, even adding the telephone from vanilla design. It is also copy or more copy than mainstream. If it's can have only one maiden, or is it to be you, my dear sister? Okay. To show my sincerity, I share my newly acquainted with you. My dear are lethal. They paralyze people upon contact and plot their plot. I share my name, Pesca, that this is true. Please think of a well, the time from. I hope you can free me from this bed. Your हेपेनॉन. अच्छा, हेपेनॉन है एल्डर डॉटर, उसका सिस्टर है मैंड्रागोरा. तो यहाँ पे तो दोनों चीज मिल गया है. हेपेनॉन और मैंड्रागोरा ये दोनों हैं सिस्टर्स. कैंट्रेला एक है. कैंट्रेला इनका सिस्टर नहीं है, लेकिन ये जो एनालाइज हिसाब से ये दोनों सिस्टर्स है. तीसरा है कैंट्रेला, एक है कैंडिडेट. चौथा है एनी. एनी और क्लोई के कुछ रिलेशन है, वो देखना पड़ेगा. और कैंट्रेला क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, वो भी देखना पड़ेगा. Hebenon. She was such a timid girl, like a frightened rabbit. She'd peek out from behind Mandragora, her little face half hidden. She cried so often. I still remember the day she brought me tea laced with mercury. Her hands trembled so much, tears spilling into the cup as she tried to serve it. भाई यार, अच्छा तो उसका पार है पॉइजन, मतलब लिथल. उसका ईयर है, वो लिथल है. तो ये सर्व करने आया था मर्क्यूरी के साथ. और टीयर स्पिलिंग इनटू द कप as they try to serve it. पता नहीं क्या फैमिली चल रहा है. ये फैसले फैमिली क्या है. Such a good girl, really. So I couldn't bring myself to refuse her. Had I not drunk it, the abyss closing in on us would have taken us both. The tea itself, well, it was tolerable. Certainly better than sea apple. Just a bit of burning, a touch of dizziness, and a pounding ache in the head. Okay. Purely little. Whether it was her tears that softened the poison, or my body's quiet resilience, I recovered quickly enough. Only through suffering could the girls of the trials steal a fleeting moment of peace. Forgive me. I shouldn't linger in memories. After all, it's the present and future that truly matter, wouldn't you say? खतरनाक फैमिली ये फैसले फैमिली. Build a path forward. Our delicate little friend seems to have slipped above us. Yeah. I'll find us a way.
ओ अच्छा, ऊपर जाना होगा क्या? ओके, तो यहाँ पे कुछ है क्या? Okay. Coming in the contact with the umbrella of the bouncy jelly, bounce originator open. You can use interact with the bouncy jelly in the current dimension. Other dimension appear as version of anyone. अच्छा, तो ये ग्रीन कलर होगा तो एक्टिवेट है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो डीएक्टिवेट, इतना पता है। इसमें क्या करना होगा? ओह नाइस, यहाँ पे एक चीज है, ये ले लेता हूँ। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? डायमेंशन चेंज करना है। अच्छा ठीक है। ओह नाइस, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आसपास देख लेता हूँ, कुछ आइटम शायद मिल जाए, कुछ बॉक्स। ये एक है जो कि मुझे मिल रहा है। और भी ज़्यादा मिल रहा था, हमें पहले देखा नहीं था, लेकिन मिलता तो जरूर। तो बहुत सारे मिस करते हैं। ठीक है, Look, there it is, just a step away. इसका मतलब क्या है? एक मिनट, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि मुझे कुछ ढूंढना होगा। नहीं, It seems everyone desires the deadliest jellyfish. Expired obsessions rarely know when to stop. Why not savor this? Oh, this will be fun. Tides. ओह, ये पर्दा हिलता है, ये पर्दा हिलता है, लेकिन फर्क ये है कि ये आर पर जा रहा है। नहीं नहीं, आर पर नहीं जा रहा है। ओह नाइस। ओह भाई यार, नाइस। ठीक है, यहाँ पे जाना होगा फास्ट। रिवार्ड मिल रहा है, पीछे भी कुछ रिवार्ड मिल रहा है क्या? देख लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ना, कुछ भी नहीं। We desire, and so we find. अच्छा, सिर्फ ये रिवार्ड के लिए ही ये चेंज हुआ है ना? ये फैंटम है। That tickles.
अरे यार डैमेज दे दिया। क्या चाहते हो? कितना घुमा घुमा के यहाँ पे पहुंचा है। अच्छा, इसके पास एक पेपर है क्या? देयर हैपन the head of our family has always told us that born you the physically is and base coldness and lessons gather food family abroad is always old little bit as the eldest daughter is my duty। अच्छा, तो हेपेनॉन है, एल्डेस्ट डॉटर नहीं है हेपेनॉन, ये एल्डेस्ट डॉटर है मैंड्रागोरा, एल्डेस्ट डॉटर। as an eldest daughter it is my duty to uphold these dignity while our way missing house they are accomplished by way of the expectation and the honor of our name. I have resolved to relinquish all personal desire, allow the board seep into my free soul. Okay. Being pain yet both from this far I just will know exactly what the head invention was like. You too are a daughter of the senior line, and I implore you not to follow in our cousin foot. अच्छा, in our cousin's footsteps. Gather your strength, determination, so that when you face each other in the trial, we shall do as we shall become the militant. I will honor your sacrifice and will end. If you are chosen, I hope you will be the same. I will honor your sacrifice, and if you are chosen, I hope you will be the same. Since I become the militant early. क्लोई का लेटर था, एनी का था। और यहाँ पे हेपेनॉन और मैंड्रागोरा, ये दोनों का लेटर आ गया, लेकिन कैंटरेला का लेटर नहीं है अभी तक। Mandragora, just like her name, was a bright yet lethal flower. Oh, please don't misunderstand. Lethal is the highest praise for a Phasalia. हाँ, मतलब जीनियस जहाँ पे मेंशन किया जाता है, यहाँ पे लिथल मेंशन किया जाता है। She clung to every teaching of the head of our family, shaping herself so meticulously that her thoughts and her very self vanished, lost to the family's cold framework. I saw the weight of what she gave for that trial, all for a cause that was barely worthy of her sacrifice. So, when she served me the scone, dipped in the essence of jelly rose, I didn't hesitate to swallow it all. अच्छा, तो when she served me the sauce dipped with the essence of the jelly rose. अच्छा, तो एक था जो कि खुद का टीयर सर्व कर रहा था टी में मर्क्यूरी के साथ, और एक है जो कि जेली रोज सर्व कर रहा था। भाई दोनों ही खतरनाक मतलब कॉम्बिनेशन है सिबलिंग से। She was much tougher than Hebanon, but still, behind her unwavering gaze, I caught a flicker of reluctance, a shadow of something almost tender. As for the poison, the sensation was
I felt like I was drowning in slow waves, my body twitching without control, and my vision slipping into a soft blur. And somewhere within that haze, I saw us transformed. Birds, perhaps, dancing on a sunlit shore, carefree and joyful. But then I woke up. There was no sunlit shore around, and I lay here, as ever, in this cold abyss. Deliver the jellyfish. अच्छा तो वहाँ पे जंप करके जाना पड़ेगा क्या? जंप कर लेते हैं. Check the second note. Seems like this little one is ready for a duel, trying to take your life with its venom. But I despise unnecessary fights. Hand it to me. Yes, just place it gently here. You have already entered this. Nothing to fret about, dear. I've long since made my peace with poison. This jellyfish, a remnant of the past, can't harm me now. अच्छा तो ये इसको कंज्यूम करना होगा क्या जेलीफिश को? You have such a kind heart, always ready to take on burdens, even while carrying your own. But some weights belong only to those who've already weathered their storms. So, let me bear this one. हाइड्रेशन हो रहा है क्या? See? I'm fine. लग तो नहीं रहा है लेकिन जैसे प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही कुछ लग रहा है. हाँ, Come now. वैसे ही कुछ लग रहा है. We've more to uncover. प्रिटेंड कर रहा है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो है, इफेक्ट तो कर रहा है. अच्छा दोनों नहीं है अभी. अभी है कैंट्रेला और एनी फेसिलिया. पास द सेकंड ट्रायल. अच्छा द लॉस ऑफ टू बिलोंग फैमिली मेंबर वेट हेवीली ऑन अस. However, as a facility, it's hard to replace to continue with the trial. For the rise of the maiden, we stand on being prepared to bear any cost. तो 4 थे ना, 4 या 5 थे, 4 थे शायद. पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा. कंफ्यूज हो गया. 4 डोल थे या 5 डोल थे. Jellyfish have no voice. They simply drift in the tide, struggling to let their faint glow disperse the darkness. Yet, here it is, a small shimmer of light, escaping the grip of the past to reach us now.
Interact with the door. Knock 3 times. You find this door familiar. You have tried knock on your 3 times. Ah, it seems a subtle shift has taken place. I can smell danger. Let's look closely and see what new presence lingers here. Live to hunt. अभी नहीं लेना है. Observe the door. Talk to Cantarella. To senses the hidden secret. Cantarella के साथ बात कर लेता हूँ. Doll wearing the red hat appear on the table out of nowhere, drawing your attention. You recall someone saying it's symbol of the fortune. As long as you follow the divinity, luck will surely be on your side. Okay, ठीक है, देखते. But is it really so? You are lost in thought. As the door slightly appear behind you. Cantarella, are you all right? Why? I stand perfectly well right before you. Tears wouldn't grant me mercy, and I never intended to blindly follow rules that were never meant to be kind. Okay. I earned my place, my own way. That's why I stand here now, able to share this with you. Okay, तो मुझे ये ढूंढना होगा. यहाँ पे एक नोट मिलेगा शायद. 12 jellyfish lived in the sea, floating silently as can be. Who swim slow, their pace they crawl, soft in a whirlpool they fall. 12 था, to swim slow. Okay. उसके बाद 10 रह गया. 10 jellyfish lived in sea, apples of they can feel to the entire rest are, the rest are free. अच्छा 12 jellyfish. उसके बाद 10 floating silently as can be. 2 swim slow. अच्छा 2 jellyfish थे जो swim कर नहीं पाए, whirlpool के साथ चले गए. एप्पल 10 जेलीफिश में 2 एप्पल खा लिए, ब्रीथ नहीं कर पाए. The rest are free. 8 jellyfish dipped in the sea. अच्छा dipped in the sea. They are left. How many jellyfish left? How many jellyfish? How many are left? How many are there left? How many are? अच्छा they are all with picture book है ये. The waves came crashing, eager to snuff out every spark they found. Poison and whispers slithered in, seeking to clear wing. Sweet dreams were shelved away, locked tight, only to wither into silent, brittle tears.
ओके, एक बुक मिला है, Live to मुझे hunt. डिलीवर करना है और कुछ नहीं है आसपास, तो यहाँ पे डिलीवर कर लेता हूँ। Since omni's presence on the book shelf, next moment it takes shape before you. ओके, तो यहाँ पे फाइट करना होगा। The flames are raw. Something from the fading chaotic frequency. Use lamp pure dawn from the abyss. It's a book. कहाँ पे book? Apartment dash. There's something dash. Unbeatable. Can't go anywhere. Keep pouring. Everything is in here. Okay. Throw this. Stomach it. So bad. Message in picture book. Okay. So darkness, colorless, no picture, no wish, no still no god. Headless, godless, or plotless, soulless. I do not exist. Okay. तो ये कुछ वैसे था। While disappears from the book page, winding around your heart. You press the book, short, your chest tight. Do a deep breath to steady yourself. ओह, नीचे फायर हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। तो हेल फायर जब एक्टिव हो रहा है उसके बाद नीचे से इफेक्ट आ रहा है। Live to hunt. प्रिपेयर योरसेल्फ कहाँ पे? फिर से चेक कर लेता हूँ। कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, अभी इंटरेक्ट आ रहा है। There's a weight to the air behind, a mixture of whispers from the deep, dried tears, and the stale, lingering scent of blood. Behind this is the deep water zone. Are you ready to face the relentless surges? The place ahead is beyond the reach of light, like the night sky devoid of stars, hungry to consume everything within. Okay, let's It go. will be dark and murky there. Please stay close to me. ओके, ये सेम नहीं, ये सेम लेफ्ट नहीं है, ये डोल है। टॉक टू द बैरलियर डोल। ओके,
ballerina. The doll lifeless face stare at you. Ajit fiercely prickling on the golden spine. Final performance? Begin soon? Hat? Unfit. Huh? Help me. Bring the round hat. What final performance? We're talking about round head final performance. Doll not responding. You are affected by that selfish correct? No, it's merely some old memories resurfacing. Don't worry. I'm quite well. Okay. When I entered this place, I knew that certain memories would seek me out, even if I did not wish for them to. Seems I'm not as resilient as I thought. $41 मीटर आगे जाना पड़ेगा. So it's the round head. Round head से Why सुना not होगा मुझे. savor this? अच्छा तो ये पेजेंट आना होगा उसके बाद Here, the देखना past पड़ेगा. and future, dreams and reality, are intricately intertwined, inseparably bound. The chaotic frequencies here might have trapped the light. Let's try once more, gently. Patience and encouragement always help. अरे यार ये सब क्यों आ जा रहे. Oh, this will be fun. Feel the tide change. अरे यार कहाँ जा रहा है. ये यहाँ पे आ. Oh, this will be fun. Surge of deep tides. Why not savor this? वो क्या कुछ है. टेंट पोस्टर. अरे रुक जा. How rude. Victory is mine! Ha! Listen carefully! अच्छा white hat, red hat, red hat, red hat. Feature poster announce the final performance. The two dolls on it look strangely familiar. Okay, तो एक कैंट्रेला है, दूसरा है एनी. We've scoured every inch of the backstage, including every shadowed corner. अच्छा तो ये
स्टेज बैक स्टेज था और यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे थे, दोनों सीट था, दोनों का सेपरेट सीट था, यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे थे और It परफॉर्मेंस seems के the लिए रेडी round हो रहे थे. hat isn't here. Control. एक मिनट. इतना स्ट्रेंज टाइप क्यों खड़े हुए हैं? Who will sink into the depths with me? Quite the stance, I see. Sink into the endless deep. Surge of deep tides. Why not savor this? ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? At long last, the final performance. Dance and fight. The maiden's crown will soon appear. And rest upon one among you. Find the right doll. Find कैसे करें? Why not savor this? Doll इधर है. Round hat for you. Take them. ये सब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? The round head into your hand with no further explanation. So trusted first round head. There a red velvet of the head gleams coated in girls simmering tear. It's like a maraschino cherry on a frosted cake. Sweet and bitter. Deal with the round head. वो डोल क्या थे? डोल का कॉन्सेप्ट क्या था वो? Round hat. Thank you. डोल डांसर सी के पास था. But thank you. और बट थैंक यू मतलब क्या है? The final performance begins now. Go. The front. Closer. Clear. Reassured. The whole broken word seems to suggest you to step closer to the stage for a clear view. But be reassured. Who should feel reassured? You or the doll? The answer may lies ahead once the performance begins. Okay. Doll. Showtime. Need light. डोल के लिए रियोसर्ड नहीं है, रोवर के लिए हो सकते हैं, नहीं तो कैसे लेते हैं? Lamp. कब तक ये सब मेंशन होगा देखते हैं. अभी तक नहीं बोल रहे. ओके इतना ही बोल रहा है. The frequencies are too chaotic. No worries. We'll try again.
Try use the lamp again. भाई यार क्या खतरनाक ये मतलब चल रहा है ये गेम ये बैक टू द स्टेज अच्छा नहीं चल सकते दौड़ नहीं सकते चल के जा सकते हैं ये क्या था एनी ये एनी है You must be Annis. एनिस जिसका वोकल कॉर्ड नहीं है डिस्ट्रॉय हो चुका है And also Girl A, who couldn't speak but managed to send me that message. You want me to find her, right? We better watch ourselves. They might have tricks up their sleeves we can't even imagine. How dare she show up in the town after everything they did? Will the lost souls truly return home? रन हर जाना था वो लाइट दिख रहा है We better watch ourselves. They might have tricks up their sleeves we can't even imagine. ये सिचुएशन क्या है कैंट्रेला कहाँ गई और ये एनिस कहाँ से आ गई The Cantarella I know is unbreakable. She will never falter, even if you drown her with all these malicious whispers. And you certainly won't shake me either. But can the glimmers from these delicate drifters truly light up the entire sea? ये first is Yes, just the heart place of it the gently sea. here. Okay. I, Cantarella Thessalia, value every promise I made to you, and vow to see them through. See upon her arm, offering a gentle Besides, embrace. there are certain places that only you may be able to reach. Run to her. Come now. We've more to uncover. पहुंच गए
Light the lamp and find her. अच्छा एबिस के अंदर चलेगी क्या? All those years of lying and scheming, and what have you gained? A tarnished reputation. You could have walked away from this, Cantarella. I still remember the little you, the youngest, the most neglected of all the Thessalians. You always lingered by your cauldron, and only smiled when a bird fluttered past the window. You despise this place, don't you? But the blood in your veins, it binds you, holds you prisoner in this endless nightmare. You loathe our rules, yet they have already seeped into your very existence. Ternodian, इसके साथ बात करिए. Tell me, have you ever considered leaving? Let go of this burden that crushes you, and you'll be free as air, free to live the life you've longed for. My dear lord, I've already gifted you the sweetest of dreams. But why do you still cling to this earthly burden? You watched with satisfaction as I climbed over the fallen, ascended the steps to glory, and wore the thorned crown. Was that not enough for you? Illusions are no match for poison, Cantarella. False bubbles burst, and here we are, the end of it all. Well, you see, illusions can also lead to true beauty. Your obsession, corrupted by whispers, has become a shadow over the castle. A deluge of delusions that shouldn't exist in this world. I can feel the pain those whispers inflicted upon you. Allow me to free you from them. Once more. अभी इसके साथ फाइट करना Give होगा. trapped prey. Satisfied. The abyss may reside in. हाँ यार. इम्यून फॉर्म है तो इम्यून है all form of attack से. During the combat, your lamp energy can be charged by performing dodge and counter attack. अच्छा, लैम्प चार्ज होगा उसके बाद ही कर सकते हैं कुछ. I'll geld you double. Just a scratch. No time to lick your wounds. Right behind you. No worries. अरे इसके साथ काम नहीं कर रहे थे. Same actor, different role. It's but a splash. इसके सामने काम नहीं कर रहा है. Now is the time. Let the light shine bright. कहाँ जा रहा है? आ जाओ. Surge of deep tides. We haven't fully banished the whispers. Watch out! The twisted obsession is returning to the shadow. अरे यार क्या चल रहा है यहाँ पे? इतना अच्छा टाइम मिला था. Who will sink into the depths with me? Oh, this will be fun.
Same actor, different role. That's it. Now, free him from the Canadian whispers. Oh, this will be fun. Feel the time for reptiles playing. Engulfed by sea's venom. My lord, I offered you the sweetest of dreams and safeguarded your legacy when you departed. I have entrusted Phassalia's true faith to one most deserving, and the Threnodians' deceptions in the inverted tower have been laid bare. No more whispers shall haunt us. Our children are freed from the cruel burdens of those trials. Now, you too shall find release from the Threnodians' whispers. अच्छा, तो वो थ्रोनोडियन का पावर था जिसके वजह से ये सब चल रहा था। ये सब रियल है या होस्ट है? दे आर नॉट होस्ट। Nothing escapes your eyes, does it? We're here, alive and well. In that hellish duel, Cantarella shielded us with illusions. अच्छा, तो कंट्रेला इनको प्रोटेक्ट की थी। It all started with a false hope. An elixir to grant any wish was said to be here. We dived into darkness, choked down fear. Nothing's here but the deep and ourselves. The elixir was our blood and tears. Yet the bane gave us sweet dreams. At last, through the shadows, we reached the end. Once Cantarella took charge of the family, she shielded us, keeping us safe in the castle's depths. अच्छा, तो कंट्रेला के पास पावर था पास्ट और प्रेजेंट का। The Order's members were always prying, eager to find out the truth. I knew if we went out recklessly, we'd only invite danger. Though, I really miss my home, more than I can say. Fortunately, Cantarella holds the Night of Remembrance every year. With our masks, we can slip away, even just for a while, back to our village. अच्छा अच्छा, जिस दिन फेस्टिवल होता है, अरे यार ये सब इतना डीप, मतलब सीक्रेट था क्या? फेस्टिवल के अंदर मास्क पहन के फेस्टिवल में जाते हैं, तो ये सब उनके लिए ये सब बहुत राइट मूवमेंट था जब ये लोग घर जा पा रहे थे, गांव जा पा रहे थे।
मतलब फेस्टिवल के टाइम। नाइस। It's always a great comfort to see Jojo living happily and in good health. अच्छा ये क्लोई है। यस, ये क्लोई है। My dear, from this night forward, you're free to be with your families. The gentleman here has solved the riddles. Together, he and I will craft the elixir of revival. वेट, क्या है? Since the कैसे? Threnodians' lies were unraveled, the frequencies and situations on the outside have shifted. Thanks to you, the Order is now entangled in its own troubles, too distracted to reach into the Thessalias. Most deeply affected by the Threnodians' whispers was the castle, where the former head was trapped, where innocent girls were lost to the trials. As the Threnodian fell, all these frequencies broke out at once. The long-standing fear, pain, resentment, and repression, all that the whispers had suppressed, burst free, becoming a new cage. The shackles of one's spirit were heavier than those from the outside. Yet thanks to you, we shattered those shackles together. I knew then the time had come for the girls to finally go home. I never meant to draw you into this. I was planning to shoulder it all alone. That's why for this year's Night of Remembrance, I took part myself. And as host, I chose Ghost Girls as the theme. अच्छा, तो ये रूमर्स जो थे वो यहाँ पे स्प्रेड करने का प्लानिंग ये कंट्रीला किया था। घोस्ट गर्ल स्प्रेड कर देने के बाद जितने भी इनके ऊपर जो मतलब सर्वेलेंस करके रखे थे, इनको मतलब हर वक्त देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ से थोड़ा हट गया है ये। वो सर्वेलेंस करने का जो पार्ट था वो हट गया, इनसे थोड़ा हट गया है। तो घोस्ट गर्ल के हिसाब से ये सब रिडल जितने भी बनाए थे वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। रिडल बनाए और वो घोस्ट गर्ल का जो इशू था वो सॉल्व करने के लिए रोबर को इनवाइट किया। जैसे ही रोबर यहाँ पे इनवाइट हो गया तो बाकी जितने भी थे वो साइड हो गए, मतलब ये डेंजर फील करने के बाद वो साइड हो गए होंगे और वो ये चीज़ से थोड़ा डर चुके होंगे, इसलिए ये आराम से सॉल्व हो गया। और अभी ये जो घोस्ट गर्ल का कंसेप्ट था वो सॉल्व होने के बाद जितने भी हायर अथॉरिटी थे जो भी थे ये इनके ऊपर ध्यान दे रहे थे वो हट जाएंगे। तो अभी ये सब आराम से अपने घर जा सकते हैं। मतलब ये बेसिकली ये है कि
एक इंसिडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोस्ट गर्ल का थीम डाला गया था. My plan was to break through the sea of ghosts, claim that I've solved the riddles and won the elixir of revival, and then use it to send the girls home when the Dance of the Dead begins at midnight. What are the letter I received? Your arrival, seemingly by chance, was perhaps destined. The letter wasn't my doing, but I think I know who brought you to my side. कौन है? She had no intention of hurting you with the abnormal frequencies. But she had been in the Twisted Sonoro for too long. Long enough that she was nearly one with its frequencies. She was nearly one with its frequency. When I saw that letter and sensed something unusual about you, I realized you could no longer stay out of this matter. With a special constitution, you were affected by the frequencies overflowing from the Sea of Ghosts. My arrogance blinded me. Forgive me for showing you this weak side of myself. The currents here run deep, and the tangled seaweed is thick. Even I can easily become ensnared. But you helped me untangle these knots and weathered the torrents by my side. Thanks to you, the elixir was much easier to make. That's why I said a skilled brewer is far more important than the ingredients or the process. Please accept my heartfelt gratitude. Thank you for being here and for staying by my side. Cantarella, you don't have to bear it all alone anymore. You've got someone you can truly count on now. You're right. I have one last favor to ask. Could you take the elixir and see the girls home on my behalf? ओके, तो एक जो थी लड़की, हो सकता है कि वो एनिस हो, जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज होगी और वो ही लेटर सेंड की होगी. मुझे एनिस लग रहा है. The Phasalia doesn't enjoy a good reputation, and some villagers would resist my presence. At this point, causing any complication is the last thing I want. You, however, as the laureate who exposed the lies and turned the impossible into the possible, will carry a weight they can't ignore. If you're the one to handle this, the people will be convinced. Besides, even if the Order intends to look into this miraculous revival later, your status and capabilities will hold them back. But putting all that aside, it's with your effort that this elixir was possible. I can think of no one more fitting for this task. Don't you want to clear your name? I'll help until all is settled. Don't you want to clear your name? Names are like sea foam that easily fades away. It hardly matters to me. Besides, it may not be a bad thing for people to stay wary of the Phasalias. After all, we're a large family with deep-rooted issues. Change takes time. अच्छा, तो ये फेसिलिया फैमिली जो है काम करते हैं लेकिन छुप के.
सामने दिखाते हैं कि बहुत एरोगेंट है, बहुत डेंजर है, लेकिन पीछे मतलब ये है कि बैक सपोर्ट देके ये सबको हेल्प करते हैं। Girls, gather your things. It's time to go home. फोटो बहनों कैसा? Thank you, Cantarella, for everything you've done for us for all these years. Now that we're leaving, you'll be left alone here. You should never have had to bear such a heavy burden. I still remember what you told me back then, during the trials. You said you wanted to leave this place behind, go somewhere far away where no one knew you, and live freely. But now, you're staying in this cold castle, bearing it all alone. As long as I am the head of Phasalia, what happened here remains buried. No more trials, no more innocent lives caught in this web. My freedom for theirs. A fair exchange, wouldn't you say? It's time to leave, my dear. ये सारे फैसिले पे लिखे हैं। एक कॉमनर है जो क्लोई है शायद। Tonight, all the riddles are solved. Behold, the elixir of resurrection. You are back. What a night to remember. वो एनी से जिसका फ्रीक्वेंसी मर्ज हो चुका है। That was a really long nap. The strange smell is gone. You smell good again. Oh, I had the best dream. I was dancing with all these cute echoes. Oh? Am I interrupting something? No, Nadi. Fine. I'll just go take another nap. Things have returned to normal, it seems. How delightful. It's late. Would you care to come to my castle and rest for the night? I love that. I could use a good rest. It'll be my pleasure. Let me walk your home. नहीं, ये ऊपर वाला अच्छा लग रहा है। Nice.
With you here, this castle feels warmer. Your presence may have dispelled the chill that used to linger. The Phasalia family. Our family's purpose has always been clear: to resist the Threnodian spiritual interference and hold fast to our faith in the Sentinel. The cruel trials were designed to find a maiden with an unbreakable will, someone who could withstand the Threnodian's whispers and fix her eyes on the true light. Yet, in pursuit of that noble cause, innocent lives were sacrificed without question. I can't accept the so-called necessary sacrifice, one that tramples the will of others in the name of duty. It's nothing but living off the weak. Though it's important to kindle the flames, none should forget those burned to ashes. Those lives shouldn't have been squandered. After all, we are more than just firewood. So you choose to offer your own strength. So you... Yes. When I took up the Sword of Divinity, I felt a presence. Someone far more capable, more suitable. A new possibility emerged. Asked the Sentinel to transfer my second awakening power to that girl. The Sentinel had always wielded the power of separation, but instead agreed to my proposal to combine our strengths. With that power, she confronted the Threnodian. We triumphed, for the moment. But the Threnodian proved to be more difficult than we expected. To stop the brutal divine trials and secure us the final victory, I chose to become the family head, drawing on every resource available to achieve our goal. I pretended to align with the Order to keep the Threnodian off guard, all while searching for a way to fully liberate the Sentinel and end the Threnodian, once and for all. And then I found you. So that's why you took me straight to the Sword of Divinity. I have been watching you from the moment you set foot in Renacita. Now I dare say I know you inside out. You defeated the Threnodian in the Inverted Tower, saved the people of Renacita, and freed those young girls. And me as well. The girls are now back home, and the Threnodian's whispers have finally faded from this castle. And with the Order's concessions, the shadows over Renacita are vanishing. Peace has come to us once more. Thanks to you, the days of pain and sacrifice have ended. A calm life. That is the miracle you've brought. As the head of Phasalia, I must offer you a fitting reward for all the efforts you made.
An elixir for eternal youth, perhaps? No. Judging from the power of your awakening, it seems you may already possess that. Then, let it be the elixir that turns stone into gold. I, Cantarella Phasalia, hereby offer you the family's entire legacy. Every elixir and every hidden secret. Too much. The Phasalias make no unprofitable bargains. It's my privilege to give it all to you. It's been a long day. You deserve a sweet, peaceful sleep. Here, a special elixir I've prepared with albizia flowers. Their gentle, lingering fragrance can waft through reality into your dream. Now, close your eyes and rest. Good night. वन टाइप ऑफ स्लीपिंग पिल है, लेकिन एनर्जी के फॉर्मेट। ओके, कंप्लीट हुआ और कुछ आइटम मुझे मिला है। पोशन, कुछ पोशन मिला, अस्टर्ट मिला, एडवांस कुछ वैसे कुछ मिला है। एडवांस सील मिला है, कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे साइड क्वेस्ट है, ड्रीम सिंड्रोम। साइड क्वेस्ट को भी यहाँ पे कर देते हैं, क्यों छोड़े इसको। ड्रीम 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 का है ना। कर देते हैं इसको, ड्रीम सिंड्रोम कर देंगे साइड क्वेस्ट का, दोनों लिख देंगे क्या है, उसके बाद ही आया होगा ना। तो टॉक टू ब्रह्मा सेरली इन द डे टाइम में देते हैं। एल्गा टाउन जाना पड़ेगा मुझे भी। चलो एल्गा टाउन जाए, फास्ट फॉरवर्ड। आइटम देखेंगे पहले, ये साइड क्वेस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साइड क्वेस्ट खत्म हो भी जाएगा। ओए भाई बहुत नेटवर्क, क्या ही नेटवर्क है। इसके पास कुछ देख लेता हूँ और कुछ आइटम है या नहीं। आइटम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी आइटम नहीं है। लग 6 से
अच्छा, टाइम अब कितना हुआ है? Live to hunt. ये रोवर है। अच्छा 6 to 18, तो टाइम चेंज कर लेते हैं। इसमें टाइम है क्या? इसमें टाइम नहीं है। फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। टाइम 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 नहीं कर सकते क्या? मैप आ सकता है, सिंक्रोनाइज टोटल गैलरी, ये सब आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है। टाइम को सेट नहीं कर सकते, टाइम वहीं से जाना पड़ रहा है। ओके 6666 तो ग्रैनी आ गई। एनी ओ एनी angel from the mirage. Hello madam, do you know any? Oh, so everyone heard of any the angels the gentle light that appear, those lost in severe they took uniform like someone there, a flower part, even a jellyfish sometime. So any just a legend. Is there anywhere in the town? Here in the town? Not in name, no, but Angel Annie is always near. भाई ये एनी चेंज हो गया किसी? एक विलेजर है लेकिन एनी जैसे इनके लिए एक एंजल हो गई। अच्छा तो ये कुछ वैसे हो सकता है कि एनी के बारे में इनको छुपाया गया होगा और एनी एक एंजल के हिसाब से प्रेजेंट किए होंगे, हो सकता है वैसे ही कुछ, क्योंकि एनी जैसे एनी का पास्ट था, शायद एनी के जितने भी रिलेटिव होंगे और सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शायद ये सब ये होंगे एनी के बारे में, हो सकता है। When someone reach a the news rumor after of any appearing the front of a form of being a clear guiding them out light structure. If strong enough to hold on, any will come to you. अच्छा तो इनके लिए एनी एक एंजल हो चुकी है। Talk to the vendor को in the daytime. ओके तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे अभी। Gift wrap prey. Satisfy my hunger.
I have conducted over 100 visits and interviews traveling between Pistorio, Wells, and Elgatown. Finally, I think I have a theory. It seems that these regions are experiencing a phenomenon, mass hypochondria, if you will. For example, many people claim to have seen an ancient knight they believe is still alive. Okay. Others speak angel named Annie said answer the call of those who unbreakable will, and Annie appearing the different form, helping those in their needed. Okay. From the record, these often seen a younger, a flower, a bird, even a jellyfish. हाँ ये कह सकते हैं क्योंकि इसका जो एनी का फ्रीक्वेंसी है वो कैसल के साथ मतलब मर्ज हो चुका है, उसके कैसल में जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मर्ज हो चुका है, तो हो सकता है कि फ्लावर के साथ भी बार्ड के साथ या जेलीफिश के हिसाब से वो अपीयर हो सकता है. Yet after combining hot record over the past few centuries, I have yet to find any concrete evidence for NH existence. अच्छा पूरा disappear हो चुकी है NH. Medically speaking, it seems more likely that these are hallucinations brought on by intense mental strain. When someone is under stress, the deep trauma might create external figure to ease the pain, like a survival mechanism. पता नहीं, लेकिन एनी लेटर में मेंशन था, क्लोई मेंशन की थी एनी के बारे में. Think of the pleasures of strengthening ties, the goal of your competition, hallucination included by talking. हाँ ये जेली रोज फ्लावर के साथ हो सकता है, लेकिन ये क्लोई मेंशन क्यों कर रही थी एनी को? In extreme cases, one's own identity can fragment, consisting of the imaginary figure. So when an entire community is facing intense pressure, but I'd say that angel or not, who salvation lies within ourselves. Don't you agree? From Dream Soul. ओके अभी 2 बाकी है, कल एक हो जाएगा, उसके बाद कैमलिया का भी हो जाएगा. मैं सोच रहा हूँ कैमलिया का पहले कर लूँ, उसके बाद जैनी का करूँगा. पहले इसका कर लेता हूँ कैमलिया का. ये बहुत पुराना है लेकिन इसका कर लेते हैं कैमलिया का. कितना पुराना है देखना पड़ेगा. मुझे तो लग रहा है कि हाँ ज़्यादा पुराना नहीं है. कौन सा पूरी कैमलिया का है ना, देखना पड़ेगा कब का है कैमलिया का.
1.4 में आया था, देखना पड़ेगा। 1.4 ये पुराना वाला है। पहले कमलिया का कर लेते हैं, उसके बाद जैनी का करेंगे। जैनी का अभी रिसेंटली आया होगा वर्जन 2 में। पहले कमलिया का कर लेते हैं, शायद जैनी का वर्जन 2 में आया होगा, देखते हैं। हाँ, वर्जन 2 में आया था, 2.3। तो पहले कमलिया का करेंगे, उसके बाद जानी का करेंगे। तो यहाँ पे रिवार्ड चेक कर लेते हैं, बैग में क्या आया है। बैग में है ये वाला पोशन, द कंट्री कैरी विद हार ऑल द टाइम, द बॉडी एंड with 3D, this is like a just person, but her very enhance the door. ये क्या करता, क्या है ये पोशन, क्या करता है वो मुझे जानना है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है कि रोबोट को दिया है, क्योंकि जितना रोबोट काम करता है, जितना प्रेशर में रहता है, उसको वो टाइम नहीं मिलता है, पीसफुल माइंड नहीं मिलता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन दी है, जिसके लिए जिसे ये मतलब पीसफुल माइंड मिल जाएगा। एक बोलते हैं कि जो उसको ये मिला था, उसको मिलेगा क्या, मतलब क्या मिल सकता है। पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, मतलब जो टेंशन होगा वो निकल जाएगा। वही चीज बोल नहीं पा रहा भाई, इतना टाइम हो गया ना, रात हो गया, माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, और एक तो नेट तो इतना स्लो है, टाइम भी बहुत लग गया। अभी 3 घंटे से ज़्यादा ही लग गया। मैं बहुत दिन के बाद खेला हूँ ना, थोड़ा थक भी गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा थका हुआ सा लगता है। ठीक है, अभी और कुछ है यहाँ पे। हाँ, बाकी ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ। एक हुआ है, बाकी बहुत सारा बाकी है। ये तो फ्री का है, कलेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी भी स्टार्ट हुआ है, 6 तक पहुँचे। अभी ये 20 तक पहुँचना था, लेकिन अब तक किए ही नहीं। ओके ठीक है, तो अभी ये हो चुका है कंप्लीट। इसका वही जो 2 चीज़ करना है, 2 दिन बाकी है, वो ये कर लेंगे, जानी का कर लेंगे, कमले का कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे मिशन में। देख लेता हूँ, परमानेंट मिशन जो है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है। 8 दिन बाकी है, ये वाला करना है, ये खोलने के बाद ही कर सकते हैं। 8 दिन बाकी है, तो ये तो मुझे ज़्यादा ये कर भी नहीं सकते। कितना दिन है, 8 दिन है ना, 2 दिन तो वो वहाँ पे लग जाएगा, 6 दिन रुक गया। एक दिन में जो थर्ड डे में करेंगे मेन स्टोरी करेंगे। उसके बाद बाकी ये सब करेंगे। 24 डेज ये परमानेंट है, ये 24 डेज का है, 24 डेज का है, क्लेम कर सकते हैं।
और ये 21 डेज का है, ये 4 डेज बाकी है, ये परमानेंट का है, परमानेंट ये कर सकते नहीं कर सकते। 24 डेज, ये भी रिमेनिंग 24 डेज है, 5 डेज बाकी है। अच्छा इसको हम ट्रायल किए ही नहीं। अच्छा इसको हम कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ये हाँ ये सब ट्रायल किए ही नहीं, कर देंगे। अच्छा ये सब है न्यू अपडेट का, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया जितने भी, और यहाँ पे भी है कुछ चीज़, ये हाँ कर सकते हैं। 26 डेज ये बाकी है, ये क्या है, ऑब्टेन अच्छा उसके लिए है ना, 3000 पॉइंट कलेक्ट करना है। हाँ एक दिन में कर देंगे, 3000 पॉइंट है ना, 3000 पॉइंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे। उसके बाद वो वाला खेलेंगे। तो ठीक है, यहीं पे गेम एंड करते हैं। गेम कल 2 दिन है ना, और 2 दिन करें, ठीक है कर देंगे। तो ठीक है यहाँ पे गेम एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू अगेन।